So good morning to all of you and welcome back again in our online lectures for the semester 4, paper 2, having the name Genetics and Molecular Biology. So dear students, in the previous lecture we have started the semester 4, paper 2 as per the protocol. The semester 4, it also having the two papers of botany, that is the paper 1 and the paper 2. We are discussing about the part of paper 2 having the name Genetics and Molecular Biology. This paper 2 having total 4 units. Out of these 4 units, first unit, unit 1 is allotted to me, which consists of the part of Mendelism, laws of inheritance, which consists of law of segregation and law of independent assortment. Next topic, interaction of genes, which is the part of allelic interaction. It involves the example incomplete dominance, having the ratio 1:2:1, and example is Mirabilis gelapa. Non-allelic gene interaction, it having the some of the explanation related to the complementary genes, then dominant epistasis. Linkage, next topic, linkage, that is a definition, theory of linkage, coupling and repulsion theory. Types of linkage, that is a complete and incomplete linkage and its significance. So let's just start with this unit 1. In the previous lecture, we have given the information related to the Mendelism or the laws of inheritance. So the genetic characteristics are transferred from one generation to another generation with the help of something, and that something is nothing but the genetic material. This something is discovered by the scientist Mendel. That something means that some of the factors which are transferred from one generation to another generation, and these factors nowadays are popularly known as the genes. These genes are related to the inheritance, means the transmission of most of the similar characteristics from one generation to another generation. And it is also related with the heredity characteristics. The transmission of similar characteristics, it is a part of inheritance, and if there is a presence of differences or dissimilarities present between the parents and offspring, it is a part of variations. And finally, if we go through the study of heredity and variations combinedly, then it is a part of genetics. The information related to the genetics, the information related to the genetics was given by the Gregor John Mendel, and they give the different laws of inheritance, that how the characteristics are transferred from one generation to another generation. That's why this concept, it is popularly known as the Mendelism, because the information, scientific information related to this inheritance or the genetics was given by the Gregor John Mendel. Later on, we have also discussed the discovery and a history related to this Gregor John Mendel. ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे बायोग्राफी थोड़ी पढ़ी थी, that Gregor John Mendel was also known as the father of genetics. He was born in 1822 in the poor farmer family in an area that is now the part of Czechoslovakia. As a young man, his desire for education was seriously hampered by poverty, and in order to continue his studies, he entered in an Augustinian monastery at Brunn and was ordained a priest in 1847. Means he completed his graduation and he started to start to work as a priest in one of the university. Later on, he was sent to the University of Vienna for training in physics, mathematics, and natural sciences. Means Gregor John Mendel, he is sent to the University of Vienna, and there he was studied some of the topic, that is the physics, mathematics, and natural sciences. Though he was not a student excellent, however, training provided him with many technical and mechanical skills that were of value in performing his later experiment. Means previously that Mendel was not excellent type of student, but as he go through the various techniques
and he gets the information and the education related to the different experiments, he becomes smart to perform that particular experiment. After return to the Brunn in 1854, he appointed as a teacher, and in 1857 he began his famous experiment on the pea plant in the monastery garden. Means later on, from the University of Vienna, he returned back to the Brunn in 1854, and now he is appointed as a teacher. Previously, he was working as a priest. ठीक है, priest करके काम कर रहा था वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में. प्रिस्ट मीन्स आप लोगों को पता है जो धर्मगुरु होते हैं, वो करके काम कर रहे थे. लेकिन later on in 1857 he began work as a teacher, and he started with his experiment, the famous experiment of hybridization experiment on the pea plant. In Mendel's experiment, selection of the garden pea, that is the Pisum sativum, was evidently not an accident but a result of long careful thoughts. ऐसा नहीं है कि पाइसम सटाइवम का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इट इज नॉट एन एक्सीडेंट. ठीक है, कोई एक्सीडेंट नहीं था या फिर अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई वो रिजल्ट नहीं मिला था. वो उसी पे काम कर रहे थे. वो फाइंड आउट कर रहे थे कि दैट व्हेनेवर इफ वी गो थ्रू द क्रॉस ब्रीडिंग और द क्रॉसिंग बिटवीन द टू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, अगर सेम स्पीसीज के दो प्लांट्स में क्रॉसिंग करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ, वो पता करने की कोशिश कर रहे थे. फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स एसोसिएटेड विद द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एट द गार्डन पी प्लांट. कुछ फीचर्स दिए हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के उन्होंने. फर्स्ट वन, पॉलिनेशन कुड इजीली बी कंट्रोल्ड इन दिस प्लांट सिंस इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट. पॉलिनेशन वहां पे इजीली कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि ये जो प्लांट था सिलेक्ट किया हुआ पी प्लांट, इट इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट. Pea plant was easy to cultivate and took only a single growing season from one generation to the next generation. Pea plant जो था वो easy था cultivation के लिए क्योंकि वो एक single season में ही उसकी life cycle complete करता था. Means that it is a annual plant. ठीक है, annual plant था. It completes its life cycle in a very short period of time. That's why we can take the next more than one life cycle. ठीक है, हम लोग more than one generation वहां पे ले सकते हैं. Peas had many sharply defined inherited differences that had been long collected by the seeds main in the form of individual varieties. Means this pea plant it consists of various contrasting characters. इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे कि जो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि दैट दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. So the pea plant it consists of the various contrasting characteristics. So this pea plant having the various contrasting characteristics, and they can be easily identified during transfer from one generation to another generation. Mendel chosen among these varieties 7 different unit characters with a good contrast to follow the inheritance. These are mentioned below. Means from this pea plant, Mendel selected the 7 contrasting character. Contrasting means opposite character to perform his famous hybridization experiment. मेंडल ने फिर इसमें से 7 different characteristics select किए थे. These 7 different characteristics which are helpful to perform this Mendel's famous hybridization experiment. Now some of the characteristics like the seed character, pod character, stem character, and here is a table which showing the 7 pairs of contrasting character of the pea plant with the gene's name and a location on the chromosome number studied by the Mendel. So we just take a look this the remaining points 5, 6, and 7. Later on we will discuss on these tables. Mendel kept experimental data of each character separately. Means Mendel was very methodological person. वो बहुत ही methodological person थे. उन्होंने हर एक कैरेक्टर के लिए जो कैरेक्टर जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उसका जो डेटा था उसके जो ऑब्जर्वेशन थे एकदम सेपरेटली उन्होंने रिकॉर्ड करके वहां पे रखे थे. That he counted the appearance of different traits for each character among the individual in every generation
and he analyzed his numerical results in the form of ratios, which facilitates to formulation of the laws of heredity. So Mendel kept experimental data for each character separately. That he counted appearance of the different traits for each character among the individual in every generation, and he analyzed his numerical result in the form of ratios, which facilitate to the formulation of laws of heredity. फर्स्टली आई वांट टू टेल यू दैट मेंडल वाज वेरी मेथोडोलॉजिकल पर्सन. वो बहुत ही स्ट्रिक्ट से हर एक चीज को बारीकी से परफॉर्म कर रहे थे. ठीक है, मेथड की हेल्प से, प्रोटोकॉल की हेल्प से वो सभी चीजों को फॉलो कर रहे थे, स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में. And whenever they perform the experiment to the related to a particular character, they record each and every character separately. ठीक है, हर एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन या फिर ऑब्जर्वेशन जो था उन्होंने सेपरेटली रिकॉर्ड करके रखा था. After that, he used this data or used this observation to calculate the characteristics which are transferred from one generation to another generation. ठीक है, to find out the ratio, that how much amount of characteristics are transferred from one generation to another generation. The 7 characters he was selected of the different 7 varieties were fortunately located on the different chromosomes. ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे. ऑब्वियसली अलग अलग कैरेक्टर्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सीड शेप, सीड कलर, then pod shape, pod color, then flower position, then height or the length of stem. So all these characteristics are different, and obviously they belong to the different chromosomes position. He studied the inheritance of one pair of contrasting character at a time. मतलब एक सिंगल टाइम पे उन्होंने एक सिंगल कैरेक्टर्स को ही कंसिडर किया था. ठीक है, अगर सीड शेप लिया है तो सीड शेप ही के बारे में उन्होंने क्रॉस परफॉर्म करके देखा. मतलब उसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग वेराइटीज ली. दैट इज वन ऑफ द सीड हैविंग अ राउंड शेप and one of the seed having a wrinkled shape. So he studied the inheritance of one pair of contrasting character at a time. मतलब सिंगल टाइम पे एक ही कैरेक्टर लिया था उन्होंने. Let's just talk about these tables. Seed character, which are divided into dominant character and a recessive character. I think there is no need to tell you that what is meant by this dominant and recessive. And the character which express in the next generation is called as the dominant character, and the character which does not express in the next generation is called as the recessive character. So in case of the seed character, seeds they are smooth in the dominant cases, and they are wrinkled in case of recessive cases. Seeds may be yellow cotyledons having the dominant character, and the recessive character green cotyledons. Dominant character in case of seed character, that is a gray coat or the covering, and recessive character a white coat. Pod character, dominant character that is the full, and recessive character constricted. Pod dominant character green and recessive character yellow. So these are the contrasting character. Contrasting means opposite. That is full, constricted, green, yellow. Stem characters, axial pods and the flowers along with the stem, and here the terminal pods and the flower on the top of the stem. Long length in case of the stem, and here is a short length. Long length, that is a tall, 6.7 feet, and short length dwarf, 3 by 4, that is near about 3 by 4 to 1 feet. Then 7 contrasting character: seed shape, seed color, then cotyledon color, then pod color, pod shape, position of the flower, length of the stem. Seed shape round, and opposite is wrinkle. Means dominant character is round and recessive character is wrinkle. Current gene symbol, it is indicated on R7. It is a position of that particular gene on the chromosome. Seed coat color gray, and recessive is white. Then cotyledon color yellow, and here is green. Pod color, that is green and yellow. Pod shape full and constricted.
Position of flower, axial and terminal, length of the stem, that is the height of the stem, tall and dwarf. Now let's just talk about the Mendel's experiment. Mendel के experiment के बारे में हम लोग देखते हैं. Mendel tested the 7 characters individually by contrasting the variety carrying a particular trait of character, for example, tall, with another variety carrying different trait of the same character, that is dwarf. Likewise, he made the process among the smooth seed shape variety with wrinkled one. He obtained all the smooth. Similarly, when he crossed yellow cotyledon seed variety with the green cotyledon variety, he obtained all the yellows. Likewise, he made the crosses between the gray coat into the white coat, full into constricted pods, green into yellow pods, axial into terminal pods. In F1, every process he obtained a gray coat seed, constricted pod, green pods, and an axial pod respectively. मतलब इन्होंने यहाँ पे टोटल 7 कैरेक्टर्स के सेपरेटली क्रॉसिंग करके दिखाए, तो उन्हें सभी जगह पे कौन से कैरेक्टर मिले होंगे? They find the dominant character in the F1 generation. सभी F1 generation में उन्हें dominant character ही मिले होंगे. Unfortunately, Mendel's crosses between the two different varieties for each character and always produce in the F1 that was only one type of. However, when these F1 plants were permitted to reproduce by self-pollination, both the parental progenies were appeared in the F2 generation. Means, unfortunately, Mendel's crosses between the two different varieties. Whenever the Mendel crosses between the two different varieties, in the F1 generation, they got a different result, but in the F2 generation, the condition is recovered, or the condition getting as like the parent generations. Parental progenies were produced in the F2 generation. For example, tall F1 seeds, that is a progeny produced after a crossing. Tall into dwarf plants produced after self-pollination, F2 of 787 tall and 277 dwarf. Similarly, the self-pollinated yellow F1 produced 6022 yellow and 2001 green seeds in the F2 generation. These ratios are in each instance very close to 3:1 and can therefore also be written as 3 by 4 or 1 by 4 or 75 as to 25 or 75% to 25%. So summary of the F2 data obtained by the Mendels from the different monohybrid cross in the P in the mentioned below. ठीक है, क्रॉसिंग करने के बाद उन्होंने अलग अलग रिजल्ट्स वहां पे अलग अलग रेशियोज फाइंड आउट करने की कोशिश की. The lots of information and the lots of data collected by the Mendel after performing his experiment. So this is a table that is a monohybrid cross data for the 7 characters. मैंने 7 characters के लिए अलग-अलग combinations लेके उन्होंने वहाँ पे कुछ data collect किया for the dominant characteristic, recessive characteristic. Then total number of characters are there and they find out the ratios in large. Upon testing the monohybrid process of the individual 7 characteristics, the result obtained were identical. The following conclusions are drawn from the findings. यानी कुछ conclusion इन्होंने यहाँ पे निकाले थे. F1 derived from the process between the two contrasting character of the variety shows only one parental trait and never the other. मतलब जो F1 generation मिल रही थी हर जगह पे उन्हें, जो F1 generation मिल रही थी, that F1 generation it shows only single character. वहाँ पे एक single character express हो रहा था और दूसरा character express नहीं हो रहा था. In F1 generation, the characters or the trait that had been expressed is called as the dominant character. ये तो हमें पता है कि जो character F1 generation में express होता है उसे हम लोग dominant character कहते हैं. While the other which hidden and not expressed in the F1 generation is called as a recessive character. The trait that hidden in the F1 and reappeared in the F2 generation unchanged and identical, but only in the frequency of 1 by 4th of the total number. जो ट्रेट हिडन थी मतलब F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रही थी एंड रीअपीयर्ड इन द F2 जनरेशन, मतलब वो जो कैरेक्टर था वो F2 जनरेशन में वहां पे रीअपीयर हो रहा था. इसका मतलब क्या हो रहा था? जनरेशन एंड आइडेंटिकल बट ओनली इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 by 4th of the total number. ठीक है, एंड 1/4 पार्ट ही उसका एक्सप्रेस हो रहा था जो हिडन कैरेक्टरिस्टिक था उसका.
irrespective of which parent variety provided the pollen and which the ova, every reciprocal process, the F1 progeny receives the same. Thus, there was no indication that any trait or the character was transmitted only through the maternal or the paternal inheritance. मतलब जहाँ पे जो क्रॉसेस हो रहे थे, ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉसेस जो हो रहे थे, in this process there is a no indication that any trait or the character was transmitted only through the maternal or paternal inheritance. मतलब जो जब जो भी क्लासेस हो रहे थे वहां पे, तो वैसा वहां पे इंडिकेट नहीं हो रहा था कि ये कैरेक्टर मैटरनल से ही एक्सप्रेस हो रहा है या फिर पैटर्नल से ही एक्सप्रेस हो रहा है. All the characters are expressed according to their capability, that is the part of dominancy and recessive characters. In F2 generation, characters or trait of both the parents appears is a defined proportion, that is in case of the 3:1. ये तो हमें पता है कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं F2 जनरेशन में, उसका जो एक्सप्रेस हम लोग कैरेक्टर्स देखते हैं फिनोटिपिकली अगर देखते हैं तो उसका रेशियो 3:1 मिलेगा हमें. From the evidence came out after studying F1 and F2, Mendel concluded that there present some determining agents responsible for the expression of each trait. मतलब हर एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए वहां पे पर्टिकुलर एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ऐसा वहां पे मेंडल ने कंक्लूड किया. ही कॉल्ड इट एज अ फैक्टर. मींस समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. ठीक है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए कोई तो भी हेल्प कर रहा है, तो फिर कोई तो भी वो कैरेक्टर एक जगह से या फिर एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन की तरफ लेके जा रहा है. मेंडल ने उस समथिंग को नाम दे दिया फैक्टर. This factor that determines the appearance of trait could be hidden but not destroyed. ये जो फैक्टर था वो that determines the appearance of trait, ठीक है, वो पर्टिकुलर ट्रेट को मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हुए वहां पे बता रहा था. इट कुड बी हिडन, वो हिडन भी हो सकता था, लेकिन वो एक्सप्रेस तो कर रहा था, उसे ट्रांसफर तो कर रहा था. ठीक है, दैट फैक्टर इज इट इज हेल्पफुल टू ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर वेदर इट इज हिडन बट इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड. मतलब वहां पे रिसेसिव कैरेक्टर भी होता है तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था. ठीक है, भले ही वो दिख नहीं रहा था वहां पे, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था. दिस फिनोमेना बाय विच वन ट्रेट अपीयर्स इज कॉल्ड एज अ डोमिनेंट and the other does not appear referred as a recessive, even though the factor for both the traits are present. Now this is a crossing, simple crossing. You know that all of you, सब लोगों को पता है. Parent generation, selection of parent, smooth variety, wrinkle variety of seed. Then genotype, smooth variety के लिए capital S, wrinkle variety के लिए small s. Gametes find out किए, यहाँ से capital S निकला, यहाँ से small s निकला. They go for crossing and they got the F1 generation, capital S, small s. And this hybrid variety, it is smooth because the dominant character that is a smooth. So this dominant character is express and another character does not express, but there is presence of that another character that is a recessive character. In the F2 generation, the smooth and wrinkle. Smooth means it is a pure variety. Then these smooth, these are the hybrid variety, and this is a wrinkle variety. So ratio we will get, that is 1:2, 2:1. In case of the genotypic ratio, phenotypic ratio is 3:1. Mendel laid down the foundation stone of genetics by representing his main result to the Brune Society of Natural Sciences in 1865 and also published his work in the Proceedings of the Society in 1866. Later on, Mendel ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद इसकी जो इंफॉर्मेशन थी, he presented his paper और द रिसर्च इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रून. ठीक है, ब्रून सोसाइटी में, वहाँ पे नेचुरल साइंसेस की ब्रून सोसाइटी में वहाँ पे उन्होंने वो पेपर प्रेजेंट किया, बताया कि दैट दिस कुड बी पॉसिबल. देयर वाज नो रिस्पांस टू हिज डिस्कवरी अंटिल 1900. मतलब 1866 से लेके 1900 तक, मतलब करीबन 4 साल तक उसके एक्सपेरिमेंट को कोई भी रिस्पांस नहीं मिला. they unnoticed his experiment and they said that this is a useless work. This long delay in recognizing the Mendel's contribution derived from the number of special reasons. ठीक है, this long delay in the recognizing Mendel's contribution derived from the number of special reasons.
मतलब जितना डिले कर रहे थे ये उतना ही उनका लॉस हो रहा था, क्योंकि उसके बेसिस पे आगे की सभी डिस्कवरीज डिपेंड थी। द मेन कॉज फॉर निग्लेक्ट ऑफ मेंडल्स फाइंडिंग आर, मतलब मेंडल के जो वर्क था, मेंडल की जो डिस्कवरी थी, वो निग्लेक्ट करने के पीछे क्या ड्रॉबैक्स थे वहां पे उन्होंने बताया। यूज ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना। मतलब जो बाकी के जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों को ये वहां पे कन्विंस नहीं हो रहा था कि मैथमेटिक्स का यूज कैसे कर सकते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, हम लोग स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, बायोस्टैटिस्टिक एक नई ब्रांच आ चुकी है हमारे लाइफ साइंस में। ठीक है, यूज ऑफ मैथमेटिकल, लेकिन उस समय 1866 के समय वहां पे उन्हें ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा था कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स का यूज किया जा रहा है बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए। दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग बायोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब जो बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट थे उस समय, तो उन्हें ये कुछ बात ठीक नहीं लग रही थी। मेंडल एक्सप्रेस हिज रिजल्ट इन अकॉर्डेंस विद द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेके परफॉर्म किया था। However, many of his contemporaries, for example Darwin, Galton, and others are followers of the continuous variations, and discontinuous variation was not so important in evolution. मतलब मेंडल के अगेंस्ट में जो साइंटिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट थे, डार्विन थे, गैल्टन थे, ये फेमस नेम है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एवरी फील्ड, मोस्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, ज्यादातर फील्ड में डार्विन का नाम, गैल्टन की थियरीज है। ठीक है, तो ये लोग जो उन्होंने जो थियरीज दी थी, ठीक है, दैट कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन के बेसिस पे उन्होंने स्टडी किया वहां पे कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का वहां पे कोई यूज नहीं होता है इवोल्यूशन के केस में। लेकिन मेंडल तो जेनेटिक्स के बारे में बता रहे थे, ठीक है, ये इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट उसे पास नहीं किया या फिर उसे कन्विंसिंग नहीं माना। Mendel explained his result on the constancy of character of species generation after the generation। मतलब मेंडल ने जो कैरेक्टर एक्सप्रेस किए थे या फिर जो वहां पे थियरी दी थी, दैट Mendel explained his experiment result on the constancy of character of species from generation after generation। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्होंने वहां पे कैरेक्टर एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने बताया था कि दैट दिस कैरेक्टर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कॉन्स्टेंटली। मेंडल वाज much ahead of other biologists in understanding of the fertilization and behavior of chromosome at that time। उस समय मेंडल की जो थिंकिंग थी या फिर मेंडल का जो सोचना था वो बहुत ही आगे था। ठीक है, कोसों दूर था, हम लोग बोल सकते हैं कि उनका विजन जो था वो बहुत आगे था एज कंपेयर टू दिस डार्विन एंड गेल्टन, because at that time there was no discovery of microscope and even the process of cell division। वहां पे माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल नहीं था और सेल डिवीजन की प्रोसेस क्या होती है वो भी डिस्कवर नहीं हुई थी। फिर भी मेंडल ने बताया था कि दैट genetic characteristics are there and these are responsible for the transmission of character from one generation to another generation। So Mendel was much ahead of other biologists। बाकी के biologists के कंपैरिजन में ये बहुत आगे की सोच थी इनकी। Mendel failed to continue his finding on the subject after his first paper। मतलब यानी मेंडल को थोड़ी दिक्कत जा रही थी क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन और माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडल ने यहाँ तक तो पता कर लिया था कि दैट समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड इट इज नथिंग बट द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आगे की जो डिस्कवरी थी वो पता करने के लिए उन्हें डिफिकल्टी जा रही थी। मेंडल कुड नॉट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द वैलिडिटी ऑफ हिज फाइंडिंग्स इन अदर स्पीसीज। मतलब बाकी स्पीसीज के केस में वो वहाँ पे फाइंडिंग्स करना उनको पॉसिबल नहीं हो रहा था, वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उन्हें आ रहा था। नोटेड बॉटनिस्ट नगोली डिस्क्राइब टू हिम हिज फेल्यूर टू वेरीफाई हिज कंक्लूजन इन द हिरासियम एंड अदर प्लांट। ठीक है, यानी कुछ बॉटनिस्ट ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप दूसरी स्पीसीज में भी ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद में हम आपको यहाँ पे कन्विंसिंग उसको एक्सपेरिमेंट को मानेंगे। This may created a doubt about his reproducibility
and the applicabilities of the Mendel's conclusion to other plants. मतलब वहाँ पे वो doubt create कर रहे थे. However, in the year 1900, Mendel's paper was discovered simultaneously by the three botanists Hugo de Ries in Holland, Karl Correns in Germany, and E.V. Schermack in Austria. साइमल्टेनियसली मतलब कुछ सालों बाद वहां पे क्या हुआ कि मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट तीन साइंटिस्ट को मिला कि जो उसी चीज पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे कि दैट हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. उन तीन साइंटिस्ट के नाम थे ह्यूगो डिराइस, कार्ल कोरेंस एंड शेरमैक. उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट बताया. Each of these investigators obtained evidence for the Mendel's principle from their own independent studies. They all found the Mendel's report while searching the literature for related work and cited it in their own publication. मतलब मेंडल की ग्रेटनेस जो थी वो इन तीन साइंटिस्ट लोगों को पता चली एंड लेटर ऑन they know the greatness of Mendel. William Bettison, an Englishman, gave the name to his developing science of the heredity and variation as a genetics in 1905. He coined the term genetics from the Greek word meaning to generate. Next part, that is terminology and the symbols which are utilized in the Mendel's experiment.